In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. Today, I've brought an important topic for all of you, and that is noun phrases and clauses. And students are mostly confused between noun phrases and adjective phrases. In this video, I've tried my level best to remove this confusion and to make you understand the real difference between the noun phrases and adjective phrases. I hope you would like my video. Don't forget to press like button. I'll wait for your kind comments, and those who have not subscribed my channel, I request them to please press subscribe button as well. I'm grateful to you. Thank you. Now, first of all, what is a noun phrase? Phrase, in fact, individually, is a group of words. More than one words. More than one word is called a phrase. And as far as noun phrase is concerned, a noun phrase is a group of words that includes a noun but no verb at all. ये आप याद रखिएगा कि noun phrase group of words होंगे जो कि complete sentence नहीं होगा. As we know, complete sentence includes subject, verb and object in it, or subject and verb at least. उसमें verb भी होता है और उसमें object भी हो सकता है to make it a complete sentence. लेकिन जो noun phrase होगा उसमें verb कभी नहीं होगा. A noun phrase refers to words that work the same way as a noun. अच्छा, उस कंप्लीट सेंटेंस को वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे ना, वो एज अ होल आपके लिए नाउन का काम करेगा. देखिए, वैसे तो नाउन एक वर्ड होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ समथिंग लाइक टेबल, चेयर, अहमद, सालार. These are the name of the persons, places और things. इसको आप नाउन कहते हैं. वो नाउन एक्ट्स एज अ नाउन अलोन. लेकिन यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ होल विल एक्ट एज अ नाउन. फॉर नाउन फ्रेज फीचर्स अ नाउन. इसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या अदर मॉडिफायर्स हो सकते हैं. सो नाउन फ्रेजेस कैन बी अ सब्जेक्ट. देखिए, पूरा एक नाउन फ्रेज जो होगा ना, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिनके अंदर नाउन होगा, वो एज अ होल या तो सब्जेक्ट होंगे पूरे सेंटेंस में, या एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे वो सेंटेंस के अंदर. लेकिन वो सिंगुलर नाउन नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे. वो पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सिंगुलर नाउन का काम करेंगे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी आ सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन भी आ सकते हैं. मैंने इन सबको अलग अलग आपके लिए डिफाइन किया है कि एज अ सब्जेक्ट नाउन फ्रेजेस क्या होंगे, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हाउ दे विल एक्ट एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाउ विल दे एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट एंड हाउ विल दे एक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ सब्जेक्ट आपके पास नाउन फ्रेज कैसे आएगा. आई होप यू आर अटेंटिव टू इट. अ सब्जेक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सेंटेंस और क्लॉज इज अबाउट. सब्जेक्ट को तो आपको पता है, एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है और आगे उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया पूरे सेंटेंस में, दैट इज अनदर थिंग, बट इट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट. For example, I've written examples for you as well. Very many broken cars remain in the garage. Now see, very many broken cars remain in the garage. Remain is a verb. In the garage is adverb. अब आप देखें, क्या चीज गराज में रहती है.
अगर सिर्फ कार्स होता तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता। कार्स रिमेन इन द गैराज फॉर एग्जाम्पल, हम ये लिख सकते थे कार्स इज अ नाउन, सिंगुलर नाउन है हमारे पास कार्स विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन यहां पे सिर्फ कार्स ही नहीं है, वी हैव सेड दैट वेरी मैनी ब्रोकन कार्स, कि बहुत सी जो टूटी फूटी कार्स होती हैं, बहुत ज्यादा तादाद में जो टूटी फूटी कार्स होती हैं वो गैराज में रहती हैं। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? वेरी मैनी ब्रोकन कार्स। वेरी मैनी ब्रोकन कार्स के बारे में बताया हुआ है कि दे रिमेन इन द गैराज, सो दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ नाउन एट इट्स हेड। उसके हेड पे नाउन का होना जरूरी है। अब ये नाउन सिंगुलर नहीं था, सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता कार्स जो है, इसके साथ कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं जिनके बारे में हमें बताया हुआ है, वेरी मैनी ब्रोकन कार्स। So these whole group of words, this group of words, it acts as the subject of the sentence. ये पूरा सिर्फ एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तहत काम कर रहा है। वेरी मैनी ब्रोकन कार्स के बारे में बताया हुआ है कि रिमेन इन द गैराज। So a group of words which act as a subject of the sentence, and then rest is the verb and the object, indirect object, adverb, whatever. लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिर्फ कार्स नहीं है, वेरी मैनी ब्रोकन कार्स हैं। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए, दोज बुक्स ऑन माई टेबल आर वेरी प्रेशियस। अब आप देखें क्या चीज हम मेरे लिए प्रेशियस है, क्या चीज मेरे लिए कीमती है। सिर्फ ये नहीं कहा कि बुक्स आर वेरी प्रेशियस। बुक्स होता तो ये एक सब्जेक्ट होता ना हमारे पास, कि किसके बारे में बात की है? बुक्स के बारे में हमने बात की है कि बुक्स आर वेरी प्रेशियस। यहाँ पे एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज अ सब्जेक्ट, कि दोज बुक्स ऑन माय टेबल, हमने स्पेसिफाई किया है कि वो बुक्स जो मेरी टेबल पे हैं वो बहुत कीमती हैं। अब दोज बुक्स ऑन माय टेबल, उनके बारे में आगे बात हुई है, आर वेरी प्रेशियस। सो दोज बुक्स ऑन माय टेबल एक्ट एज अ होल, इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? कि जिसके बारे में आगे सेंटेंस में बात की जाती है। तो यहां पे कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट। दोज बुक्स ऑन माय टेबल, उनके बारे में बात हुई है कि आर वेरी प्रेशियस। So this is a noun phrase. See in the third sentence, noun phrase ही group of words को phrase कहते हैं। जब ये noun phrase होगा तो इसका मतलब है it acts as a whole as a noun. The ability to help others is a very important character trait. Now see, the ability to help others. अब यहां पे सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रीट। अगर ये होता तो वो एज अ नाउन ही होता, सिर्फ एक नाउन है विच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, के एबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रीट। यहां पे है कौन सी एबिलिटी जो है वो आपके किरदार की बहुत अहम खसूसियत है, दैट इज द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स। एज अ होल आप लेंगे कि दूसरों की मदद करने की जो सलाहियत है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बताया गया है आगे फर्दर सेंटेंस में कि वो एक बहुत अहम किरदार की खसूसियत है। सो द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, यहां पे नाउन फ्रेज इज एज अ होल एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द डिसीजन टू मैरी, यहां पे ये बात नहीं है द डिसीजन वॉज सेलिब्रेटेड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, उसका फैसले को तमाम फ्रेंड्स ने सेलिब्रेट किया मिलके। कौन से डिसीजन को? डिसीजन को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है, अ डिसीजन टू मैरी, उसकी शादी करने का जो फैसला था उसको तमाम फ्रेंड्स ने सेलिब्रेट किया। तो शादी करने का फैसला, द डिसीजन टू मैरी एज अ होल एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसके बारे में फर्दर हमें बताया गया कि इसको सेलिब्रेट किया बाय हिज फ्रेंड्स। इसी तरह वर्किंग इन द हॉट वेदर इज वेरी टफ,
What is very tough? अब आप देखिए क्या चीज टफ है. Working in the hot weather. गर्म मौसम में काम करना बहुत टफ है. सो क्या चीज टफ है? व्हाट इज टफ? तो आप बताएंगे इसका होल आंसर क्या होगा? वर्किंग इन द हॉट वेदर. सो वर्किंग इन द हॉट वेदर इज अ नाउन. इट इज अ नाउन फ्रेज. क्यों? कि ये सिंगल नहीं, हम कह सकते थे वर्किंग इज वेरी टफ, कि काम करना बहुत मुश्किल है. यहां पे स्पेसिफाई किया वर्किंग इन द हॉट वेदर. ये पूरा एक सब्जेक्ट है. आगे उसके बारे में बताया हुआ है इज वेरी टफ. बहुत मुश्किल है. क्या मुश्किल है? वर्किंग इन द हॉट वेदर. Now see another important thing in these sentences. इन sentences में दूसरी अहम चीज जो आइडेंटिफाई करने वाली है वो क्या है? वो ये है कि now all these statements they answer the question what. अब आप यहां देखें, ये तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं ये किस चीज को आंसर कर रहे हैं? what को. What remain in the garage? Very many broken cars. Subject है ना. What are very precious? Those books on my table. What is a very important character trait? The ability to help others. What was celebrated by all his friends? The decision to marry. What is very tough? Working in the hot weather. I hope this thing is clear to you. यानी देखिए बहुत से वर्ड्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. उन बहुत से वर्ड्स के बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया है कि क्या चीज है. रिमेन इन द गैराज. क्या चीज रिमेन इन द गैराज? वेरी मेनी ब्रोकन कार्स. ये सब्जेक्ट है which has a noun in it, that is cars. Those books on my table आर वेरी प्रेशियस. क्या चीज कीमती है? किताबें, बुक्स, नाउन. लेकिन उस नाउन को बहुत से वर्ड्स के साथ मिला के एक बनाया गया है. दोज बुक्स ऑन माई टेबल. इट एक्ट्स एज अ नाउन फ्रेज. द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स. क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है आपकी, क्वालिटी है? एबिलिटी. एबिलिटी इज अ नाउन. द डिसीजन टू मैरी. What is the noun in it? Decision. किस चीज का decision to marry? So it is called noun phrase. कि noun को थोड़ा और describe किया गया in few words. This is called noun phrase when it acts as the subject of a sentence. आप अपने पेपर में whenever the paper is given to you, you will be asked to identify whether it is a noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, whatever it is. Now see, this whole acts as a noun having a head noun word in it. This is called noun phrase. Now see, noun phrase sometimes act as a direct object of the sentence as well. ये याद रखिएगा, whether it acts as a subject, इसके अंदर noun के बारे में बताया जाएगा. Head word must be the noun. इसी तरह as a direct object, its head word must be the noun. A direct object refers to a noun phrase, noun or pronoun that is a recipient of the direct action of a verb. They bought books for. उन्होंने किताबें खरीदी. किसके लिए? The whole class. Now see, class is a noun, but it is joined with few more words. The whole. कि पूरी क्लास के लिए. So they bought books. उन्होंने किताबें खरीदी for the whole class. Now here, noun phrase acts as an object. They brightly decorated. उन्होंने डेकोरेट किया, खूबसूरती से डेकोरेट किया. What? The wooden house. Now, house is the head word, which is the noun. So here, the wooden house is a noun phrase. क्योंकि एक नाउन को साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ डिफाइन किया गया है. He wants a cute kitten for Christmas purposes. What does he want? A cute
kitten. Kitten is a noun, but it is identified with a group of words. He wants what? A cute kitten. अब आप देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चाहता है? A cute kitten. Kitten is a noun. So here, but a cute kitten, noun phrase है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो यहां पे नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. अब आप देखिए, when you are given a sentence, for example in your paper, they brightly decorated the wooden house, and wooden house is underlined or it is highlighted, written in bold print, and you are required to identify. आप कहेंगे they brightly decorated, उन्होंने डेकोरेट किया what? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसका? the wooden house. And house is a noun. It must be noun phrase कि सिर्फ house नहीं है, wooden house है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक जो एंड होते हैं नाउन पे. It means it is a noun phrase. I hope you understand my point. I saw a black zebra at the zoo. Now see, I saw what? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? A black zebra. A black zebra is a noun. हमने zebra देखा, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में डिफाइन करके एज अ होल उसको ऑब्जेक्ट बना दिया कि मैंने ब्लैक ज़ेब्रा देखा एट द जू. ज़ेब्रा इज अ नाउन. आई सॉ इज अ वर्ब. वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ ब्लैक ज़ेब्रा. इट्स अ नाउन फ्रेज. So here noun phrase acts as a direct object of a sentence of the verb. She was what? वो क्या थी? The devil in disguise. वो भेस बदल के, यानी वो एक शैतान थी, भेस बदला हुआ शैतान थी वो. She was the devil in disguise. She was acts as a verb here. इसका डायरेक्ट एडवर्ब क्या है? सिर्फ devil नहीं है, the devil in disguise है. She was the devil. Devil is a noun. But devil what? Devil in the disguise. In disguise. So this whole acts as the object of the sentence. It is called the noun phrase. क्योंकि इसमें noun है, devil है, next second last sentence में zebra है, third last में kitten है, fourth में house है, एंड द फर्स्ट सेंटेंस में क्लास है, लेकिन इनको थोड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ डिफाइन किया गया है. दिस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज व्हेन इट एक्ट्स एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. So the direct object examples as they directly receives the actions of the verb, that is bought in the first sentence, decorated in the second sentence. Directly decorated what? The wooden house. He wants what? A cute kitten. I saw what? Black zebra. She was what? The devil in disguise. Now coming to as an indirect object. An indirect object identifies the person to whom or for whom a verb action is done. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसपे एक्शन इफेक्ट करता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए किया जाता है. For example, in the first sentence, Mary cooked her weak sickly grandmother some food. अब यहाँ पे ये भी हो सकता था Mary cooked some food. ठीक है, मैरी ने कुछ खाना पकाया. लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक मैरी कुक्ड सम फूड, क्या कुक किया? सम फूड. एक ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है मैरी कुक्ड हर वीक सिकली ग्रैंडमदर. अब वीक सिकली ग्रैंडमदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए काम किया जाए. सेंटेंस के अंदर वो वर्ड्स या वो वर्ड जिसके लिए काम हो, वो और क्या काम है? दैट इज सम फूड. सम फूड इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? वीक एंड सिकली ग्रैंडमदर. नाउ सी, ग्रैंडमदर इज अ नाउन, लेकिन कैसी ग्रैंडमदर है? कमजोर है, बीमार है, उनके लिए. सो दिस होल इज अ नाउन फ्रेज
Weak, sickly grandmother is a noun phrase. लेकिन in this sentence it acts as an indirect object. जबकि direct object तो हमारे पास already है, Mary cooked some food. But for whom? Weak, sickly grandmother. My uncle loves to read children's stories. Loves is a verb. What does he love? He loves to read children. He loves stories. Stories is a direct object. मेरे अंकल को क्या पसंद है? स्टोरीज पसंद है. लेकिन यहाँ पे किसके लिए एक्शन, एक और चीज बताएगी आपको कि किसी के लिए भी ये एक्शन हो रहा है, ये वर्ब है. माई अंकल लव्स टू रीड चिल्ड्रन. टू चिल्ड्रन इज अ नाउन. टू रीड कि उनके लिए पढ़ना, बच्चों के लिए पढ़ना मेरे अंकल को पसंद है. माई अंकल लव्स टू रीड चिल्ड्रन स्टोरीज. देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस. Children, to read children, and stories. Stories is a direct object, while indirect object which receives action, that is children. I wish my friend a good evening. I wish what? I wish a good evening. अब देखें, अगर ये होता I wish a good evening. I wish का direct object क्या है? A good evening है ना. लेकिन दरमियान में कुछ एडिशन हुई हुई है कि किसके लिए मैंने ये एक्शन किया. आई विश माई फ्रेंड. सो माई फ्रेंड इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फ्रेंड इज अ नाउन. इट इज एडेड विथ वन मोर वर्ड, दैट इज माई. It has been specified, so it becomes noun phrase which acts as an indirect object of a sentence. Similarly, we have offered somebody deserving a special job. Now see, we have offered a special job. Special job is an object. हमने क्या ऑफर किया? स्पेशल जॉब ऑफर की. लेकिन किसके लिए की, ये भी यहां पे मेंशन है. So there are two objects. We have offered somebody deserving a special job. Somebody is a noun. Somebody, कौन है वो somebody? Who is deserving. It's a noun phrase. Acts as indirect object in a sentence. Therefore, the indirect object is the noun phrase. In this case is weak, sickly grandmother, and it receives the food. The food is the direct object since it gets the verb action cooked. Cooked what? Cooked food. देखिए, डायरेक्ट जो रिसीव करेगा ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है. वो आप डिफाइन करेंगे, एक्स्ट्रा आप डिफाइन कर देंगे सेंटेंस के अंदर. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कमिंग टू एज अ कॉम्प्लीमेंट. हाउ कैन नाउन फ्रेज एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट? अ कॉम्प्लीमेंट गिव्स डिटेल्स अबाउट अ नाउन. अ कॉम्प्लीमेंट फॉलोज वर्ब्स लाइक am, will, is, were, was, and are. For example, the best African clothes to wear. Now see, the best African clothes to wear are colorful and gorgeous Ankara. Now, African clothes to wear are Ankara. Ankara is a noun. It is the name of some dress. But what is that dress? Colorful and gorgeous. So, noun phrase acts as a complement of a sentence. We had trouble. हमें मुश्किल पड़ी. किस बात की मुश्किल थी? Arriving on time. वक्त पे पहुंचने की. अब arriving on time acts as a whole. Noun phrase. It acts as the object. You have a problem finishing your assignments on time. Now see, you have a problem. आपका एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम का नाम क्या है? Finishing your assignments on time. This is the complement which further describes. Her trouble finishing her degree began years ago. Her trouble, उसकी क्या मुश्किल है? Name of the trouble, further description, complements. Finishing her degree began years ago. He gets anxiety. उसको एंजाइटी हो जाती है. एंजाइटी का नेम क्या है?
आगे फर्दर उसको डिस्क्राइब किया गया है मीटिंग न्यू पीपल. नाउ सी हियर it acts as noun phrase act as the complement of a sentence. Now in the first sentence clothes हैं the best African clothes. कौन से हैं? Colorful and gorgeous Ankara. Clothes को further complimentary remarks दिए गए. Trouble, we had trouble. Trouble is a noun. कैसी trouble? Arriving on time. Trouble को further compliment दिया गया. You have a problem. आपका एक मसला है. Problem is a noun. लेकिन यहाँ पे noun को further आगे complimentary कुछ remarks दिए गए. That is finishing your assignments on time. Her trouble, क्या trouble है उसकी? Finishing her degree. He gets anxiety. Anxiety है उसको. Meeting new people. So, noun phrases act as the complement of the sentence as well. As an object of the preposition. How they act as an object of the preposition? The prepositional object refers to a pronoun, noun, noun phrase that precedes a preposition in a sentence. Now see, John drives to. John drive करता है कहाँ? To a distant home. Now see, home is a noun. कैसा home है? To a distant home. दूर जो उनका घर वाक़या है, एक फासले पे, जहां उनका घर वाक़या है, वो वहां ड्राइव करता है डेली. So it comes, a distant home comes after a preposition. So it is an object of the preposition. Mary lives in. In is a preposition. वो कहाँ रहती है? In an electric household. Now see, household is a noun. कैसा household? An electric household. Sorry, eclectic household. Eclectic household. Eclectic means from various styles, from various ideas, methods. Eclectic household. Now household is a noun. Which household? Eclectic. Eclectic household. So, this is a noun phrase, but it acts as the object of the preposition. It comes after in. That is a preposition. The concert was held for charity. For what? For charity. It must be held for charity purposes. There must be one more word here. They walked into the sunset. Now see, into what? The sunset. The box in the shelf is full of memories. In the shelf. Shelf is a noun. But it comes after preposition that is in. In the shelf is full of memories. So the noun phrase in the sentence are, for example, a distant home. The preposition is to. It comes after to. In the second sentence, eclectic household comes after in. For charity comes after for, and they walked where? Into the sunset. The sunset comes after the preposition. Similarly, shelf, the box, where? In the shelf. So it's an object of the preposition. Now difference between noun phrase and adjective phrase. This is very important because students are mostly confused about the difference between noun phrase and adjective phrase because they seem almost the same. But the important difference you must keep in your mind, which I myself have explored after, a good deal of search, that is, noun phrase answers the question what. ये आप याद रखिएगा कि noun phrase होगा और एडजेक्टिव फ्रेज में अगर आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसमें आपने ये याद रखना है कि नाउन फ्रेज जो होंगे वो किस चीज को आंसर करेंगे, किस क्वेश्चन को, व्हाट को करेंगे, while adjective phrase answers the questions why, who, which, etc. But noun phrase must answer the question that is what. For example, now see the examples. The dog with the brown spots belongs to my neighbor. Now see, the dog with the brown spots belongs to my neighbor.
अब आप कहेंगे द डॉग विद द ब्राउन स्पॉट्स acts as a noun phrase. It acts as a subject of the sentence. Definitely, you are right. But here, which dog belongs to my neighbor? You can't say what dog belongs to my neighbor. Which dog belongs to my neighbor? किस किस्म का dog है जो कि मेरे neighbors का है? The dog with the brown spot. So it does not answer the question what. Subject is only the dog, while with the brown spots show that which type of dog. So it is adjective phrase. The lawyer is the man of high principles. Now see, who is a lawyer? So it answers the question who. आप ये नहीं कहते what is the lawyer? Who is the lawyer? The lawyer is the man of high principle. High principles qualify the word lawyer, the noun lawyer. But it's an adjective phrase. Now see in the next sentence, the old crumbling wall may collapse anytime, any moment. Now, first of all, it acts as a subject. The old crumbling wall. Therefore, it's a noun phrase. Secondly, it answers the question. What wall may collapse? What may collapse at any time? What collapse? What may collapse at any time? The answer is the old crumbling wall may collapse any moment. Similarly, in the next sentence, the film playing now is my favorite. Now, see, what film is my favorite? This is the wrong question. Here, which film is my favorite? The film playing now, जो अभी अभी play हुई भी है, जो अभी जारी है, is my favorite. So it answers the question which. It is an adjective phrase. To lie to others is wrong. What is wrong? क्या चीज गलत है? And the answer is to lie to others. Acts as the subject of the sentence as well. So it's a noun phrase. Remember, my dear viewers, the basic difference between the noun phrase and adjective phrase is the question, the type of question. Noun phrase always answers the question what. Remember this thing. And adjective phrase will answer the question otherwise. I bought a loaf of bread. वैसे तो देखिए bought is a verb. What is the direct object of bought? A loaf of bread for breakfast. Because it's a noun phrase. Because it acts as a direct object. Still, if you are confused whether it's a noun phrase or adjective phrase, I bought. What did I buy? I bought a loaf of bread. Again, answer the question what? Grandmother found the old family album. The old family album is a noun phrase. First of all, it acts as a direct object. Secondly, what did the grandmother find? उनको क्या मिला? What? The old family album. It's a noun phrase. Are the shoes under the chair yours? Now see, are the shoes under the chair? Adjective phrase. It qualifies the word shoes. But he says that adjective phrase as it qualifies the word shoes. It does not answer the question what. Means which shoes are yours? The shoes under the chair. So it answers the question which. That is called it's an adjective phrase. I hope the difference what is the noun phrase you might have understand it, must have understand and cleared your viewpoint. Now second is what is the difference between adjective phrase and noun phrase. Now coming to noun clause. Noun clause always
starts with the question word or. So, now coming to a noun clause. A clause answers the question who or what. If a clause answers the question who or what, it is called a noun clause. A noun clause is a dependent clause that takes the place of any noun in the sentence, whether they are subjects, objects, or subject complements. Now, what are the 5 functions of noun clauses? Noun clause can function as subject, object, or indirect object. For example, why my pet turtle stares at me all day is beyond me. Now, see, again as a subject, but see, he says that noun clause must answer the question who or what. What is beyond my understanding? Why my pet turtle stares at me? Now you must know that clause always starts with the question words why, what, where, whom. They are not questions, but they make the part of the sentence which is dependent clause. Why my pet turtle stares at me all day? क्यों मुझे वो तमाम दिन वो मुझे देखता है? My pet turtle is beyond my understanding. So this whole acts as the subject of the sentence. But starting with why, यहाँ पे why question नहीं है. Why my pet turtle stares at me all day is beyond my understanding. वो क्यों देखता है मेरी समझ से बाहर है. So क्लॉज का आपने ये याद रखना है. क्लॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है. वो इसलिए कि क्लॉज हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं होता और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये डिपेंड करता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे. सिमिलरली आई हैव अ सरप्राइज फॉर. मेरे पास एक सरप्राइज. आई हैव अ सरप्राइज फॉर whoever wins the race. Now see, whoever wins the race is, it depends on the other part of the sentence, that is I have a surprise. So here I have a surprise. Surprise for what? Whoever wins the race. So whoever wins the race is a noun clause which acts as the direct object of the sentence. Whoever is the last one to leave. जो भी सबसे एंड पे जाएगा टर्न्स ऑफ द लाइट. वो लाइट को बंद कर दे. whoever is the last one to leave. देखिए अगर हम यहां पे इसको छोड़ देंगे तो ये अकेला एग्जिस्ट. ये नामुकम्मल जुमला है, नामुकम्मल सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है. इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टर्न्स ऑफ द लाइट. So whoever is the last one to leave turns off the light. It acts as the subject of the sentence. Please tell me. मुझे बताएं. Who left his shoes on the floor? अब यहाँ पे who से sentence start हुआ. Although it is a question word, but it is not a question. ये question नहीं है. ये कह रहे हैं कि प्लीज मुझे बताएं कि किसने अपने जूते फर्श पे छोड़े हैं. Who left his shoes on the floor? So please tell me who left his shoes on the floor. ठीक है कि मुझे बताएं कि किसने अपने जूते फर्श पे छोड़े हैं. स्टार्टिंग क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड who, what, where, when, whoever, whatever, whichever, but it must depend on the other sentence. और आप कैसे करेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है. इट ऑलवेज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये आपको ये क्वेश्चंस आपने माइंड में रखने हैं. नाउन क्लॉज जो है वो हमेशा आंसर करेगा हु को और व्हाट को. आई लाइक टू कीप अ शेड्यूल ऑफ. व्हाट डज आई लाइक टू कीप when I have upcoming assignments, appointments. मैं वो शेड्यूल रखना चाहता हूं when I have upcoming appointments. So object of the preposition of, but it is a noun clause. क्यों noun clause है ये? Because it answers the question what do I like to keep. Actors can become.
whoever they want to be on the stage. Whomever they want to be on the stage. एक्टर्स कर सकते हैं जैसा वो स्टेज पे जैसा वो बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं. सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब दैट इज बिकम. Actors can become on the stage. Actor can become whomever they want to be on the stage. So whoever to want to be is the complement of the linking verb that is become. What can the actors become? Answers the question what. Now my dear viewers, I hope the difference is clear. आप ये याद रखिएगा कि noun phrase always answers the question what, while the noun clause always answers the question who and what. This is the difference. I hope this video, these things are clear to you once and for all. I thank you all. Please don't forget to subscribe my channel and do press like button. I'll be waiting for your kind comments. Thank you and goodbye.